पता नहीं, पर दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो चलो गेट रेडी विद मी फॉर दिवाली 2022। हाय गाइस, मैं हूँ अंकिता और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मेकअप, हेयर, आउटफिट इंस्पिरेशन जिन्हें आप आसानी से दिवाली के लिए रिक्रिएट कर सकते हैं। Before that, quickly go ahead and subscribe to our Be Beautiful channel and ring the bell icon to stay updated with our latest videos. Let's begin with makeup first. पर अगर आप अपना इनर फेस्टिव ग्लो बाहर लाना चाहते हो तो स्किन प्रेप करना बहुत जरूरी है। Now to create a clean canvas, cleanse your face with an exfoliating face wash. Here's the one that I am using today. This is the Pear's Fresh Renewal Face Wash, pH balanced with gentle exfoliating beads. इसके अंदर माइक्रो बीड्स है जो चेहरे को क्लेंस करने के साथ साथ एक्सफोलिएट भी करते हैं, जिसकी वजह से इट हेल्प्स लिफ्ट ऑफ डेड स्किन सेल्स, डर्ट एंड इम्प्योरिटीज। साथ ही इट मेंटेन्स द स्किन्स मॉइस्चर लेवल एंड कीप्स द स्किन हाइड्रेटेड एंड फ्रेश for a really long time. Now to add some added glow back into my skin, I like to use a sheet mask. So this is the one I'm using. It's almost like giving my skin a quick fruit facial like glow. So this is the Lakme Blush and Glow Strawberry Sheet Mask Fruit Facial like glow. Place the mask on your skin and let it sit for 5 to 10 minutes. फिर मास्क को उतारने के बाद एक्सेस लिक्विड को चेहरे पे फेशियल मसाजिंग टूल से मसाज करें। मसाज करने से चेहरा प्लम्प नजर आता है एंड प्लम्पनेस ऑलवेज बूस्ट द ल्यूमिनोसिटी ऑफ द स्किन। सो वैसे तो आई लाइक यूजिंग शीट मास्क इन द नाइट ताकि फिर मैं इस शीट मास्क के लिक्विड को चेहरे पे ओवरनाइट रखूं, पर क्योंकि आई हैव एन एंटायर स्किन केयर एंड मेकअप रूटीन लेफ्ट टू डू, मैं इस शीट मास्क को 15-20 मिनट्स के बाद सॉफ्ट क्लॉथ से वाइप करूंगी। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर डीप हाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रेशन के बिना फेस्टिव ग्लो इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं सीरम लगाऊंगी एंड दिस इज द वन आई एम गोइंग टू यूज टुडे। इट्स अ सिंपल बूस्टर सीरम विद 3% hyaluronic acid plus B5 for deep hydration. The key ingredient is the 0.5% hyaluronic acid. Alongside it has 2.5% provitamin B5 जो स्किन को स्मूथ करेगा, 0.5% pentavitamin will provide deep hydration and 1% niacinamide जो स्किन के रेजिलियंस को बूस्ट करेगा। All of this when put together is sure to make your skin glow and how. जैसे ही सीरम चेहरे के अंदर सोख हो जाएगा, I am going to apply an illuminating moisturizer. So this is the Lakme Lumi Cream. इसे हमेशा मेकअप से पहले लगाएं as it will create a subtle, almost lit from within base. All thanks to Korean pearls infused in it. But this is not just a moisturizer. It is more like a hybrid between skincare and makeup. Unique, right? Once the illuminating moisturizer has soaked into the skin, it's time to blur out the skin imperfections and create the perfect canvas for makeup application. It's time to use a primer. Here is my primer pick. This is the Lakme Absolute Blur Perfect Makeup Primer. I highly recommend using primer when creating festive looks because it will help your makeup last a really long time. साथ ही ये ब्लरिंग प्राइमर स्किन इम्परफेक्शन जैसे कि लार्ज पोर्स को फिल करेगा और आपके चेहरे को मैटिफाइड रखेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बारी आती है बेस मेकअप की। अगर आप ड्यूई फिनिश चाहते हो तो ऑप्ट फॉर फाउंडेशंस दैट कंटेन सम सॉर्ट ऑफ ऑयल लाइक दिस वन। So this is the Lakme Absolute Argan Oil Serum Foundation SPF 45 in the shade Warm Sand. Just dot the foundation on the face and neck area, and for a natural skin-like finish, use a damp beauty sponge to blend. It has argan oil that's going to give me that dewy look, and plus SPF 45, which means that it will help keep your skin protected from harmful sun rays, especially if you have skipped applying a sunscreen in your skincare routine. फाउंडेशन के बाद टाइम टू कंसील। Here is my go-to concealer. ये है the Lakme 9 to 5 Primer Plus Matte Liquid Concealer in the shade Beige. This concealer not only covers the dark circles but also fine lines and blemishes. अब मैं मेरे बेस को सेट नहीं करूँगी because I really want to retain the dewy finish. पर अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है then just dab some loose powder on the oil-prone areas. For the eyes, मैं आज क्रिएट करूंगी एक सॉफ्ट स्मोकी आई विद अ डैश ऑफ ग्लिटर। स्मोकी आई सुन के डरिए मत, क्योंकि आज जो आई शैडोज मैं यूज करने वाली हूँ विल मेक स्मोकी आई क्रिएशन अ केक वॉक। बट उससे पहले मैं एक न्यूट्रल वार्म टोन मैट आई शैडो शेड लगाऊंगी ऑल ओवर माई आईलिड्स एज अ ट्रांजिशन शेड। Now comes my hero product, which is the Lakme Absolute Explore Liquid Eyeshadow in the shade Cashmere Love and Diamond Black.
So I am going to apply the dark diamond black shade only on the outer edge of the eyes. Start with a little product and build your way through it. अब एक flat brush की मदद से pat the eyeshadow in place and then using a fluffy blending brush buff out the edges for a soft smoldering effect. Now comes the fun part. Using the other side of this liquid eyeliner duo, which is a shimmer shade, apply it starting from the inner corner all the way till you reach the dark matte eyeshadow. Then using a blending brush, blend both these colors for a seamless transition. For the lower part of the eyes, मैं पहले तो Lakme Iconic काजल लगाऊंगी on the lower waterline और उसके बाद मैं वो ट्रांजिशन शेड लगाऊंगी right below the waterline, फिर एक स्मजर ब्रश की मदद से उसे ब्लेंड करूंगी। अब इस आई लुक को मैं कंप्लीट करूंगी विद अ मस्कारा because Diwali equals drama and what better product than mascara for some added drama, right? आज मैं यूज कर रही हूँ द Lakme Iconic Volume Mascara in the shade Deep Black. As usual, wiggle and swipe it on the lashes. Best part is कि ये mascara waterproof and smudge resistant है and it has a curling formula that instantly gives your lashes a voluminous effect. Also guys, अगर आपको ऐसे festive looks पसंद है, then tap on the eye icon on the top right for more such videos. Now let's move on to the rest of the face. So let me go ahead and do my eyebrows using the Lakme Absolute Micro Brow Perfector in the shade Charcoal. Start brushing the brow hair upwards using the spoolie and then fill in the sparse area with the pencil. To color the face, blush is a must. आज मैं use कर रही हूँ the Lakme 9 to 5 Pure Rouge Blusher in the shade Peach Affair to get the almost sun-kissed blush effect. But for that sun-kissed effect, I recommend applying the blush with a damp beauty sponge. Swirl the sponge on the blush pan and then start dabbing it from cheek to cheek while extending it towards the sides of the temples. Next up is highlighter, क्योंकि दिवाली lighting के बिना अधूरी लगेगी ना? So I'm going to use the Lakme Absolute Liquid Highlighter in the shade Rose Gold. इसे high points of the face पे लगाए and blend it out using the fingers. This buildable, lightweight, non-sticky formula is super pigmented and it blends out like a dream. And finally, it's time to paint the lips. अब इस look के साथ आपको लग रहा होगा कि मैं एक nude lipstick लगाऊंगी, but honestly, I am going to go out of my comfort zone and wear a red lip because Diwali है and why not? तो आज मैं यूज करने वाली हूँ Lakme 9 to 5 Primer Plus Matte Lip Color in the shade Iconic Red. It's a nice vibrant red color जो कि सारे Indian skin tone को सूट करेगा. इसमें है built-in primer that helps the lipstick to stay put for many hours. ओके, तो अब बारी आती है हेयर की, क्योंकि सच तो ये है कि एक सही हेयर स्टाइल आपके पूरे ensemble में चार चांद लगा देगा. For this look, I am going to create a Dutch braid which is very simple yet festive. And finally, outfit और jewelry पहनने की बारी आ गई. इस look के लिए I have opted for a blue color Indo-Western set which has a gold embroidered cape jacket, blouse and dhoti style pants. For the accessories, I am going to keep it minimal. Alright then, are you ready to see some beauty shots? Here we go! So guys, कैसा लगा आपको ये Get Ready With Me Diwali 2022 वीडियो? जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे Be Beautiful चैनल को सब्सक्राइब करें and ring the bell icon to stay updated with our latest videos. Time to go, and here's wishing all our lovely subscribers a very happy Diwali from the entire team of Be Beautiful. Have a happy and prosperous new year ahead.